Yes, good evening all of you. Let us continue the MCQs based on superposition of waves. तो कल के लेक्चर में हमने कुछ MCQs देखे थे लेवल 1 के, तो आज के लेक्चर में भी लेवल 1 के कंप्लीट करके लेवल 2 स्टार्ट करेंगे. यस, चलो, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन. हमने लास्ट टाइम 11 तक किया था. ये 13 तो अलग कर सकते हो. यस, क्वेश्चन नंबर 13. Read it once. Yes, just read the question. A stretched string of length 1 meter a stretched string of length 1 meter has a frequency of 256 hertz. If the length of the string is decreased by 0.36 meter, then the frequency will be, देखो string का जो length है वो दिया हुआ है already, it is 1 meter, मतलब कितना हो गया वो 100 सेंटीमीटर हो गया, करेक्ट है नहीं? तो उस string का जो लेंथ है फ्रीक्वेंसी है वो दिया हुआ है 256 हर्ट्ज, राइट? सो जब लेंथ 100 सेंटीमीटर है तब का उसका फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है. बट अभी क्या किया कि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो डिक्रीज कर दिया बाय 0.36 मीटर. दैट मींस हाउ मच इट बिकम्स, अगर 0.36 अगर कम कर दिया तो फिर नया लेंथ कितना बनेगा? वी कैन से 1 माइनस 0.36 मीटर, मतलब वो बनेगा 0.64 मीटर. दैट मींस वी कैन कॉल इट एज 64 सेंटीमीटर, करेक्ट है नहीं? सो उसको हम लिख देंगे 64 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.36 मीटर से कम कर दिया मतलब 64 सेंटीमीटर कर दिया. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इधर का कितना होगा तो वो हमको निकालना है. So it means obviously all the other settings are kept constant. Tension in the string is kept constant, okay, and mass per unit length of the string is also constant because the string has not changed, okay. तो इसलिए यहाँ पे हमको simply NL is equal to constant ये यूज करना है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है. तो देखो N into L is going to be equal to N dash into L dash, which means 256 multiplied by L, which is 100, should be equal to N dash, which is to be found out, that is multiplied by L dash, which is 64 here. So if we just simplify this further, then we know that this 256 is the square of 16. So we can say this will be 16 fours are, and here it is 16 16s are, and also this 4 ones are and 4 fours are. So it gives 400. So we get that the frequency of the string will actually become 400 hertz. ओके, तो देखो ठीक से 400 hertz बन जाएगा स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 2 में ऑलरेडी प्रेजेंट है. यस, ओके. चलो और कौन सा कर सकते हैं? तुमने अगर कुछ डाउट सॉर्ट किए रहेंगे तो पूछो फटाफट. यस, एनीबॉडी?
ओके ये देखो 16 वाला भी बहुत सिंपल है। Just read the question. The length of sonometer wire is 1 meter. Okay, 1 मीटर लेंथ है सोनोमीटर वायर का। Yes, and its mass is 4 ग्राम। Okay, तो उसका मास जो है तो वो 4 ग्राम दिया हुआ है। Yes, and the velocity of transverse waves that travels along this wire when the tension in the wire is 2 kilogram weight is, yes, so suppose this is the wire and suppose that there is a pulley here, and suppose that this wire runs over this pulley and supports a hanger, and the length of this wire is already given to be 1 meter, right? And also that the weight of mass of this wire is also given. So अभी देखो mass of the wire लेने का फायदा क्या है, क्यों यहाँ पे mass दिया हुआ है, क्योंकि हमको mass per unit length निकालने आना चाहिए। ठीक है, टेंशन तो चलो डायरेक्ट दिया है, टेंशन इन द स्ट्रिंग हियर इज गोइंग टू बी द 2 किलोग्राम वेट टेंशन, बट रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन। ये किलोग्राम वेट में है, ये तुमको पता होना चाहिए। किलोग्राम वेट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यूटन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 9.8, रिमेंबर। so here 2 kilogram weight force means 2 into 9.8 न्यूटन फोर्स, ये बनता है। और यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ कैसे हम निकालेंगे, तो म्यू मतलब यहाँ पे मास ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। व्हाट इज द मास ऑफ द स्ट्रिंग, it's given to be 4 gram here, but don't forget again to convert it into kilogram. So 4 gram means 4 into 10 raised to minus 3 kilogram, and that is to be divided by the length of the wire, which is 1 only, and hence we get this mu finally as 4 into 10 raised to minus 3, okay, kilogram per meter, right? And once we get this mu, you can use it in the formula, because we want to find out the velocity of transverse waves that travel along this wire. So velocity का formula क्या है, v is equal to root of t by m, याद है सभी को, या mu। तो अगर ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा root of t which is 2 into 9.8, that means it is 19.6, right? या चलो रखो उसको वैसे ही 2 into 9.8, and that is to be divided by mu, where mu is nothing but 4 into 10 raised to minus 3, okay, so that it becomes finally, अच्छा ये 2 जो है वो कैंसिल कर दो इस 4 के साथ, तो 2 बचेगा इधर, और इस 2 को भी अगर रिड्यूस करो 9.8 के साथ तो वहां पे 4.9 बचेगा, राइट? सो वी गेट दिस 4.9 अपॉन 10 raised to minus 3, right? And this can also be written as root of 4.9 into 10 raised to plus 3, which makes it as root of 4900, करेक्ट है? तो 4900 रूट ऑफ 4900 मतलब कितना, 49 का रूट होता है 7 और 100 का रूट 10, so इसलिए वो 70 बन गया, 70 मीटर पर सेकेंड, which is going to be there in the option 3 here. That is going to be the correct option. Yes. ओके, ये 21st वाला देखो करके।
Okay, a sonometer consists of two wires of same material whose radii are in the ratio 2:3. The tension in the thick wire is 4 times the tension in the thin wire. If the V is the velocity of transverse waves in the thin wire, then the velocity of transverse wave in the thick wire is, yes. Okay, just see this question. Read this question carefully. The sonometer consists of two wires of same material whose radii are in the ratio 2:3. Okay, तो मतलब ये सोनोमीटर के अंदर जो है दो वायर्स है, ये एक वायर और दूसरा एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, राइट। तो ये थिन वायर हो गया, ठीक है। यस, नाउ द टेंशन इन द थिक वायर, अच्छा इनका रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, राइट। तो R1 अपॉन R2 इज ऑलरेडी गिवन टू बी 2:3। अच्छा तो उल्टा हो गया ना, फिर थिक वायर अलग होना चाहिए, ये दूसरा जो है वो थिक वायर है एक्चुअली। Yes, okay. So this is the thick wire, and now yes, radius का ratio दिया हुआ है 2:3, and the tension in the thick wire is 4 times the tension in the thin wire. That means if we consider this thin wire, tension in the thin wire to be T1 and tension in the thick wire to be T2 suppose. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tension in thick wire मतलब T2 is given to be 4 times of the tension in the thin wire मतलब T1, करेक्ट है। तो T2 is going to be 4 times of T1, ये दिया हुआ है। तो मतलब T1 upon T2 कितना हो गया, it's going to be 1 upon 4, right? Okay, तो अभी velocity, v is the velocity of transverse waves in the thin wire, तो thin wire के मतलब v1 ना, तो v1 is going to be equal to v, okay, ये दिया हुआ है। तो v2 जो है तो वो हमको निकालना है कितना है। So how can we get that? What is the relationship between velocity, tension, and radius? See, velocity of the transverse waves formed on the stretched string is given by the root of tension in the string upon mass per unit length of the string. But already we have proved that this mass per unit length happens to be simply pi r square into rho. Do you remember this? So if you replace it here, then we can get this velocity of the transverse waves on the stretched string to be given by the tension upon pi r square into rho, correct? And now if we just take this common square root of r square out, it will be r. So we can say this velocity v will be given by, yes, so v will be actually equal to 1 upon r into root of t by pi rho, करेक्ट है। यस, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस r, करेक्ट है। चेक करो यहाँ पे, वेलोसिटी जो है वो रूट टी के साथ प्रोपोर्शन में है और r के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में है, राइट। सो यूजिंग दिस फैक्ट वी कैन जस्ट, व्हाट वी कैन डू हियर इज, अभी देखो रेशियो ऑफ रेडियाई इज गिवन ऑलरेडी, करेक्ट है। रेडियस का रेशियो दिया हुआ है और टेंशन का रेशियो भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटीज का जो रेशियो है v1 अपॉन v2 कितना मिलेगा हमको, इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू द रेशियो ऑफ टेंशंस मतलब रूट ऑफ t1 अपॉन t2 डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ रेडियाई r1 अपॉन r2। ये अच्छी तरह से याद रखो,
देखो इस v के बदले हमने क्या डाल दिया, उसका रेशियो डाल दिया, t के बदले रेशियो डाल दिया और r के बदले r का रेशियो डाल दिया. Yes, so we get this equation, and if we just find out this velocity v1 upon v2, then this will be actually equal to root of, what is this, t1 upon t2, it's going to be 1 upon 4, see it here. So if we just replace it by that 1 upon 4, and finally r1 upon r2, how much it is, see it here, it is 2 by 3, right? So we can replace it by 2 by 3, and now just if we solve this further, then we can get this v1 upon v2 to be simply equal to, so root of 1 upon 4 मतलब कितना हो गया, वो 1 upon 2 हो गया, and this 2 by 3 is already there as it is. So v1 upon v2 finally becomes equal to 1 upon 2 into reciprocal of this, that is 3 by 2, correct? And hence v1 upon v2 comes out to be equal to 3 by 4 actually. But v1 is actually given as v, बराबर. तो अगर हम यहाँ पे v1 के बदले v अगर डाल देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, देखो v upon v2 becomes equal to 3 by 4, right? And if we just simplify this further, then we get this v2 is equal to 4 by 3 times of v. This is actually going to be the final answer. So 4 by 3 times of v, matlab fourth option will be the correct one. Getting it? Just discuss if you have any doubt. अगर नहीं समझा तो बोलते रहो. Okay. ये 22 वाला भी सेम वैसा ही है, देखो उसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम कर सकते हैं आराम से. 22nd वन. Okay, just read this question. Okay, देखो sonometer consists of two wires. Okay, sonometer consists of two wires of lengths 1.5 meter and 1 meter. Okay, दोनों का लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 मीटर और दूसरे का 1 मीटर. Yes, and they are made up of different materials whose densities are 5 gram per cc and 8 gram per cc, right? So their respective radii are given as 4:3. Then the ratio of tensions in the two wires, if their fundamental frequencies are equal, is. तो देखो fundamental frequency का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, याद होगा आपको? Yes. So fundamental frequency of any wire is always given by the formula n is equal to 1 upon 2l root t by m. But as we already, or mu, right? But as we already know that mu can always be written to be equal to pi into r square into rho, because उसके बारे में यहाँ पे बोला है, डेंसिटी के बारे में बोला है कि नहीं, और रेडियस के बारे में भी बोला है, मतलब उसका रेशियो दिया हुआ है. तो इसलिए यहाँ पे हमको उसको फॉर्म में, उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो वो इसको हम लिख सकते हैं 1 upon 12 root t upon
mu, where mu is nothing but pi r square into rho, करेक्ट है, जिसमें से अभी आर स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है तो वो बाहर निकल आएगा और हमको मिलेगा 1/2 L r इंटू रूट ऑफ t अपॉन पाई इंटू रो, करेक्ट है। दिस शोज दैट अभी इसमें देखो जो कॉन्स्टेंट्स है तो यहाँ पे देखो लेंथ अलग अलग है दोनों वायर्स का, डेंसिटी भी अलग अलग है और रेडियस भी अलग अलग है, करेक्ट है। तो इससे हमको पता चलता है कि ये जो फॉर्मूला है तो वो अगर हमने 2 बार लिखा, ठीक है, इफ यू राइट दिस फॉर्मूला 2 times एंड टेक द रेशियो, देन वी कैन जस्ट गेट दैट n1 अपॉन n2, मतलब जो फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो है वो कितना रहने वाला है। अच्छा, या सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L into r, because already 2 is constant, and into root of t, and that is divided by root of rho, करेक्ट है। बट टेंशंस का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ratio of tensions in the two wires is that is to be find out, right? Okay, तो अभी देखो ये n जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/LR रूट टी बाय रूट रो ऐसा है। तो उसको यूज करके हम क्या बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे जहाँ पे हमको ये दिख रहे हैं क्वांटिटीज दिख रहे हैं तो उन क्वांटिटीज के बदले डायरेक्ट उनका रेशियो डाल दो सीधा, ठीक है। क्वांटिटीज के बदले ही हमको उनका रेशियो रखना है। Just wait, okay, leave it. Okay, so basically yes, so you can just get that the ratio of frequencies, मतलब यहाँ पे आ जाएगा n1 upon n2 which is actually going to be equal to, अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमको नीचे क्या रखना है, लेंथ का रेशियो रखना है। तो जब लेंथ का रेशियो यहाँ पे रखेंगे नीचे तो वो ऊपर जाके क्या होगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा L2 अपॉन L1 बराबर इंटू रेडियस का भी रेशियो उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो इससे हमको मिल जाएगा R2 अपॉन R1, और इधर रूट ऑफ T1 अपॉन T2 जो है वो सीधा आएगा रूट ऑफ T1 अपॉन T2, but again the density is there in the denominator, and that's why we can get it in the ratio of densities will be reciprocal, that means rho 2 upon rho 1 like this. Yes, but since the frequencies, fundamental frequencies are given to be equal, so we can just cancel this n1 upon n2 and put it 1, okay, replace it by 1. So here it will be 1 which is equal to, अभी L2 upon L1 कितना है, ये देखो फर्स्ट वाले का 1.5 और दूसरे वाले का रेडियस 1 मीटर है, तो L2 upon L1 will become 1 upon 1.5, करेक्ट है। What about R2 upon R1? तो देखो रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव रेडियई इज गिवन टू बी 4/3, सो उसका उल्टा रेशियो क्या होगा, 3/4 होगा जरूर। और फिर रूट ऑफ T1 अपॉन T2 तो हमको निकालना है, नो डाउट। सो हियर इट इज T1 अपॉन T2 that is to be found out, but here ratio of densities again it's given, see here the densities are given already, एक का डेंसिटी दिया हुआ है 5 ग्राम पर सीसी और दूसरे का 8 ग्राम पर सीसी, तो ये लेकिन यहाँ पे हमको रेशियो डेंसिटी का उल्टा चाहिए ना, तो उसके लिए उसको 8 अपॉन 5 ऐसे हमको लिखना पड़ेगा जरूर। और फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो हमको मिलेगा, देखो अभी नेक्स्ट वाला जो है तो वो हम इस तरफ यहाँ पे करेंगे।
चलो ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो 1, अच्छा ये 1.5 जो है वो इट विल गेट कैंसल्ड विद दिस 3, बिकॉज 1.5 का डबल तो होता है ना 3, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया, 2 बचा। अब ये 2 जो है उस 2 को भी कैंसिल कर देंगे 4 के साथ, तो ये 2 बचेगा नीचे, और ये 2 उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 इस तरफ, और ये √8/5 जो है वो उल्टा होके उधर √5/8 बन जाएगा, राइट, एंड दैट विल बी obtained to be simply √T1/T2, correct है? But if you just square on both sides, then we can just be able to get that 4 into 5/8, correct, which is going to be actually equal to T1/T2, okay, and then we can just cancel this 4 and 8, so that we can get this T1/T2 to be simply equal to 5/2, which is going to be the correct answer, which is there in the option number 2 here. Check. Yes. Okay, so do this next one. The bridge of sonometer is slightly displaced so that the length of the wire is decreased by 0.5%. Okay, the length of the wire is decreased by 0.5%, and tension in the wire is increased by 1%. Then fundamental frequency of the wire will, okay, we can do it here only. देखो यहाँ पे हम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n is actually given by 1/2L into √T/m, right? या चलो म्यू, अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने कि length of the wire is decreased by 0.5%. What does it mean? Length has been decreased by 0.5%. Okay, and at the same time the tension in the wire is increased by 1%. Yes, so tension is increased by 1%. तो इस टेंशन को हमने 1% से बढ़ा दिया है। तो अभी उससे क्या होगा, देखो, द परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, उसको हम डिनोट करेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, जो भी लेंथ के अंदर परसेंटेज चेंज होगा तो वो उल्टा ऊपर जाके क्या होगा, नेगेटिव होगा, और लेकिन ऑलरेडी लेंथ हैज बीन डिक्रीज्ड, सो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इसलिए यहाँ पे वो 0.5% प्लस कंट्रीब्यूट करेगा। और फिर यहाँ पे ये जो 1% से टेंशन इंक्रीज हो रहा है, देखो ठीक से, टेंशन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड, सॉरी, हाँ, टेंशन इज इंक्रीज्ड, तो जब टेंशन इंक्रीज होगा तो उसका मतलब उसके अंदर जो है पॉजिटिव परसेंटेज चेंज होगा, तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर है ना वो टेंशन, तो रूट के अंदर होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो भी परसेंटेज चेंज हो रहा है उसका आधा परसेंटेज चेंज फ्रीक्वेंसी के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस 0.5 यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ेगा, ओके, जिससे हमको मिलेगा 0.5 प्लस 0.5 which comes out to be 1%, which will be the percentage increase in the frequency. Okay, frequency will increase by 1%, which is already there in this option 1 here. Yes. Okay, और ये करो अभी 24th वाला करके देखो ठीक से, 24th one. I have discussed this in the theory. जब हमने theory किया था तो उस समय मैंने ये डिस्कस किया था, याद होगा आपको? Just tell me what should be the answer. कौन बताएगा? चलो, वायर जो है under a load has a frequency n1 when the load is completely immersed in water and its frequency is n2. अच्छा, मतलब वायर अंडर अ लोड हैज फ्रीक्वेंसी n1, ओके, मतलब जब उसके ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी n1 बनता है, बट व्हेन द लोड इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स n2,
then what is the relative density of that material? So how will you find out that? What is the relationship between these things? The frequency of the wire under a load and the frequency of the wire when that same load is just immersed into water. So what is the relationship between the frequency of the initial and final frequency of the wire and the relative density of the material? Yes, already we have done it. ओके देखो हमने देखा था ऑलरेडी कि n1 अपॉन n2 is actually equal to root of sigma upon sigma minus 1. याद है ये कैसे प्रूव किया था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करके हमने प्रूव किया था, ठीक है ना? क्योंकि जब वायर जो है, वायर के साथ जब एक लोड अटैच किया जाता है तो उस समय इस वायर का जो टेंशन है वो टेंशन सिर्फ उसके वेट के बराबर रहता है। इस लोड का जितना भी वेट है तो उस वेट के बराबर, मतलब ये v इंटू रो इंटू जी के बराबर हुआ करता है। लेकिन जब यहाँ पे जो सेम लोड जब किसी लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर अगर इमर्स कर दिया जाता है और उसके बाद उसको हम वाइब्रेट करते हैं तो उस समय का जो टेंशन T2 बनता है वो एक्चुअली the same volume of the body multiplied by rho w into g. Sorry, ये टेंशन नहीं बनता है, वो एक्चुअली टेंशन इन द वायर will be the apparent weight of the body, which will be the actual weight, which is going to be v rho g minus the loss in weight or beyond force we can say, which is going to be v into rho w into g, so that we can get this T2 simply equal to v into rho minus rho w into g, correct है? And hence here we can get this T1 upon T2 to be simply equal to, तो यहाँ पे v rho g upon v into rho minus rho w into g, so that this g gets cancelled, v gets cancelled, and we are left with T1 upon T2 simply equal to rho upon rho minus rho w. Okay, and if suppose we divide this whole thing by rho w, then we can get this as rho upon rho w, which must be equal to again rho upon rho w minus rho w upon rho w, so that this rho upon rho w becomes equal to relative density, which is denoted by sigma, and hence we can get this as sigma upon sigma minus 1, and this is the ratio of T1 is to T2, which is to be put here because already we have we know that n1 upon n2 is actually going to be equal to root of T1 upon T2. Okay, and if this T1 upon T2 is going to be this, then we can just replace it by that and get this as a final answer. But here n1 upon n2 as it is, if we just square on both sides, क्योंकि हमको सिग्मा निकालना है ना, तो सिग्मा निकालने के लिए उसको फ्री करो, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा n1 square upon n2 square, right, which is going to be equal to sigma upon sigma minus 1. If we just reciprocal on both sides, then we get this n2 square upon n1 square going to be equal to sigma minus 1 upon sigma, right? So that here n2 square upon n1 square becomes equal to 1 minus 1 upon sigma. Just sigma को हमने सेपरेट किया दोनों तरफ, तो इससे हमको मिलेगा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1 अपॉन सिग्मा, राइट? और इसको अगर शफल किया थोड़ा तो हमको मिलेगा 1 अपॉन सिग्मा is equal to 1 minus n2 square upon n1 square, right? And if we just still further simplify this, then we get this 1 upon sigma to be simply equal to LCM निकालेंगे तो हमको मिलेगा n1 square minus n2 square upon n1 square, correct है? And if we just take on reciprocal on both sides, then we get this sigma to be simply equal to n1 square upon n1 square minus n2 square.
it is just simply the rearrangement of this formula here. Okay, इसी फॉर्मूला का एक सिंपली एक रीअरेंजमेंट है, ये वाला फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं। क्या किया हमने? कुछ भी तो नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूला जो रेडीमेड हमारे पास था उसको सिर्फ रीअरेंज किया है, बस उतना ही किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है, राइट? यस, so what can we say? n1 square upon n1 square minus n2 square, मतलब this one option should be the correct one. चलो ठीक है, this 26th वाला देखो ठीक से एक बार, क्वेश्चन नंबर 26. Linear density of the vibrating string is 1.3 into 10 raised to minus 4 kilogram per meter. The transverse wave propagating along the string is described by y is equal to 0.021 into sine x plus 30t, where x is in meter and t is in second. Then the tension in the wire is okay. तो देखो y वेव का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? It's already given to be y is equal to 0.021 sine x plus 30t. Okay, so this is 0.021 into sine x plus 30 into t. ये दिया हुआ है वेव का इक्वेशन, और लीनियर डेंसिटी भी तो दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे म्यू दिया हुआ है। देखो म्यू इज ऑलरेडी गिवन टू बी 1.3 into 10 raised to minus 4 kilogram per meter. It's a standard unit, no need to change anyways. So अभी यहाँ पे हमको टेंशन निकालना है ना, तो what is the formula for tension? We know that velocity v of the transverse waves formed on the stretched string is given by root of t by mu, correct है? So if we just square on both sides, then we get this v square simply to be equal to t upon mu, correct है? And if we just take this mu in that side, then we can get this t, that is the tension, to be simply equal to mu into v square, correct hai? So this is the formula for finding the tension. We have to use it here. So if we try to find out mu and v square, abhi mu to usme se already diya hua hai, dekho mu is already given, just we have to find out the velocity of the wave. And already we have proved here that the velocity of the wave when its equation is given can be easily found out by just using this formula, v is equal to omega by k. याद है ये फॉर्मूला? ओमेगा अपॉन k is the velocity, and ओमेगा मतलब क्या? t का कोएफिशिएंट, जो कि 30 डिग्री 30 है यहाँ पे, तो t का कोएफिशिएंट हमेशा ओमेगा होता है, याद रखो ठीक से। तो दिस इज 30, एंड k मतलब क्या होता है? x का कोएफिशिएंट होता है, जो कि 1 है इधर, तो इसलिए 30 upon 1 becomes simply 30, which is the speed of this wave. And if we just put it here, then we can get this mu, which is 1.3 into 10 raised to minus 4, that is to be multiplied with velocity square. So velocity is nothing but 30, और उसका स्क्वायर अगर करेंगे तो वो हमको मिलेगा 1.3 into 10 raised to minus 4 multiplied with 900, which is going to be अभी 1.3 into 900, 13 9s are 117, right? So it's going to be 117 and those zeros extra, but point will be, decimal point will be 1 digit at the left side, okay, or multiplied by 10 raised to minus 4, which makes it as, अभी यहाँ पे point जो है वो अगर 4 digit पीछे shift होगा ना, तो हमको मिलेगा 0.117 Newton. Okay, so this is actually going to be the answer, 0.117 Newton, मतलब भी 0.12 Newton, which is going to be there in option 2 here. Okay, देखो ये कर सकते हो 31, क्वेश्चन नंबर 31st, चेक।
Yes, just read it. Two sound waves traveling in the same direction are represented by y1, which is going to be equal to a1 into sine 504 into pi t. Okay, and y2 here is given to be a2 into sine of 512 pi t. So these two waves are sound waves superposed to produce beats. Then the intensity of sound changes from minimum to maximum in a time of. तो मतलब यहाँ पे देखो, ये जो हम देखते हैं कि when the beats are formed, what happens is the intensity of the sound becomes maximum, that is called as waxing, and it again becomes minimum, that is called as waning, and again it becomes maximum, minimum, maximum, minimum, and that is called as the beats. बराबर, यही beats का phenomena है. This is called as waxing, again this is called as waning, again this is waxing, this is waning, and waxing and waning are alternately produced, and the time interval between any two waxings is same as the period of beats, which is the reciprocal of the frequency of beats, right? But here we have to find out the time interval between. देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट जो है ना वो पढ़ो ठीक से एक बार. The intensity of sound changes from the minimum to maximum in a time of. मतलब यहाँ पे minimum हो गया, ठीक है, और यहाँ पे maximum होने वाला है, तो इनके बीच में जो time period है, that will be actually half of the period of beats, which is going to be t by 2, correct है, and this t by 2 is to be found out here. So उसके लिए हमको पहले beats frequency निकालना पड़ेगा कि नहीं? So how can we get the bit frequency here? We know that the bit frequency is always equal to the difference of the frequencies of the two waves producing those bits, right? So n1 minus n2, or in short we can say n2 minus n1 here in this case, because n2 is going to be greater than n1. But how we are going to get this n1 and n2? Just by equating this coefficient of t with omega. Okay, so omega 1 here is going to be 504 into pi, correct hai? In the same way here, the coefficient of t in the second equation will be omega 2 here, which is going to be 512 into pi, correct hai? But already we know that this omega is nothing but 2 pi n, so we can replace it by 2 pi n1 because it is first wave. So here it will be 504 pi, correct hai? And in the same way here, 2 pi n2 will actually be equal to 512 pi, right? So that we can say 2 pi को अगर cancel कर दो तो हमको मिलेगा n1 is equal to how much it is, pi cancel, and 252, right? 252, yes, hertz. Okay, and here it will be n2 to be obtained here. Simply it will be pi cancel, and again it is 256, right? So here it is 256 hertz. And as we know that this bit frequency is just the difference of both of the frequencies, so we can just get it as 256 minus 252, मतलब वो बन गया 4, correct है? So bit frequency is 4. Then period of bits will be 1 upon 4, which is actually going to be 0.25, right? But the question, whatever we have asked here is nothing but t by 2, correct है? ये t by 2 हमको निकालना है, तो required time जो हमको चाहिए तो वो एक्चुअली रहेगा t by 2 के बराबर. And what is this t by 2 here? It is going to be 0.25 upon 2, which is going to be actually 0.125 seconds. मतलब ही 1 upon 8 seconds, क्योंकि t जो है ना वो ऑलरेडी 1 upon 4 है, तो उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 upon 8 मिलेगा. तो 1 upon 8 seconds will be the answer. Yes, Ankita, what is the doubt? n1 n2 कैसे मिला? देखो यहाँ पे ओमेगा 1 कैसे मिला, समझा का तुमको? इसको हमने इक्वेट किया y is equal to a sin ओमेगा t के साथ. Okay, if you just equate this equation with this sin a sin omega t, then this t का जो कोएफिशिएंट होता है वही तो ओमेगा होता है, बट ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई n होता है कि नहीं? तो इसलिए ओमेगा के बदले हमने क्या किया, 2 पाई n डाल दिया. अभी उसमें से
पाई कैंसिल कर दिया और ये 2 को नीचे लेके गए और डिवाइड किया उसको 504 से, मतलब 504 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला, 252 मिल गया। ये समझा ठीक से? सेम वैसे ही इसको भी किया, देखो इसको भी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t के साथ इक्वेट किया। तो यहाँ पे t तो ऑलरेडी है इधर, है देखो ये t है, तो उसका कोएफिशिएंट कौन बन गया, ओमेगा बन गया कि नहीं। तो इसलिए ओमेगा 2 इज इक्वल टू 512 पाई लिया, बट ओमेगा इज ऑलरेडी 2 पाई n, सो इसलिए 2 पाई n इज इक्वल टू 512 पाई, सो पाई पाई गेट्स कैंसल्ड एंड दिस 2 कैन बी रिड्यूस्ड हियर। 512 को 2 से रिड्यूस करेंगे तो हमको n2 मिल जाएगा एंड सिंपली n2 माइनस n1 करेंगे तो बिट फ्रीक्वेंसी मिलेगा जिसका रेसिप्रोकल माना बिट्स पीरियड मिलेगा, पीरियड ऑफ बिट्स मिलेगा। ओके, but it is asked here the time interval between intensity, maximum intensity and minimum intensity। तो maximum intensity और minimum intensity मतलब waxing और waning के बीच में का टाइम हमको ढूंढना है। तो what is the time interval between waxing and waning? It is t by 2 because the time interval between a waxing and another waxing, successive waxing, is actually the period of bits, right? So the time interval between a waxing and waning will be just half of that, that is t by 2 here, correct है? Yes, चलो ठीक है, so let us stop here।